Hello everyone, welcome to our channel Simple Nursing Notes. आमे previous video रे already pediatric nursing रा 16 टी question पढ़ी सारिछे एवं ए वीडियो टी रे आमे 17 नंबर रो स्टार्ट करिने बा. Number 17, a 1-month-old female infant who has developmental dysplasia on the hip is placed in a hip spica cast. The infant's mother expresses the desire to continue breastfeeding. The pediatric nurse's best response is इठी हमको पचरा है कि गोटे मासर फीमेल इन्फेंट जार की हिप डिस्प्लासिया होईची एवं तार हिप रे स्पाइका कास्ट प्लेस करा होईची. सेही इन्फेंट रो मदर तार बेबी को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग देवा पाई चाहुचंती. सेही क्षेत्र रे गोटे पेडियाट्रिक नर्स कौन एडवाइस देब बा तार बेस्ट रेस्पॉन्स कौन हेब. These are the options. The answer is D. To breastfeed, hold your baby under your arm with her facing you and her legs extended behind your back. यार मीनिंग कौन? नर्स टी एडवाइस देब बेस्ट फीड करेबा पाई एवं कहब कि तुमर बेबी को तुम आर्म रे धर, तार फेस जेमती तुम आड़ को रहइबो, देन तार लेग दुईटी तुमर पछ आड़ को रहइबो, सेमती पोजीशन रे ब्रेस्ट फीड करई हेबो. Number 18, a pediatric nurse instructs parents who are concerned about the spread of illness at their children's daycare centers to inquire about the facilities, CPR training for staff, infection control practices, reported case of diarrhea during the previous year, staff to child ratios. कहुई कि जो पेरेंट्स माने तांको चिल्ड्रेन मान को डे केयर सेंटर रे रखंती एवं डिजीज स्प्रेड हेबा विषय रे बेसी कंसर्न थांती, से क्षेत्र रे गोटे पेडियाट्रिक नर्स पेरेंट्स मान को कौन एडवाइस देबा. द आंसर इज इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस. इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस उपरे ध्यान देबा. क्वेश्चन नंबर 19, ए पेडियाट्रिक नर्स इज केयरिंग फॉर ए मेल पेशेंट who has undergone a hydrocele repair. While assessing the patient, the nurse notices that the scrotum is swollen and discolored. These findings are जड़े पेडियाट्रिक नर्स गोटे मेल पेशेंट रो केयर नेउछंती जहार की हाइड्रोसेल रिपेयर होईची. जेतेबेले से पेशेंट रो असेसमेंट करूछंती से नोटिस करिछंती कि स्क्रटम टी swollen and discolored होईची. एही क्षेत्र रे नर्सेस टी कौन फाइंडिंग करिछि? ऑप्शंस आर abnormal and indicate the need for a cool compress, abnormal and indicate the presence of hemorrhaging, normal and indicate no need for intervention, normal and indicate the need for a position change. The answer is C, normal and indicate no need for intervention. Number 20, to meet the emotional needs of a 10-year-old patient who is dying, the most appropriate nursing action is to answer questions honestly and frankly, avoid interruption by coordinating nursing actions, encourage the patient to write in a journal, provide opportunities for the patient to interact with children of the same age. यार मीनिंग हेउछि गोटे 10 वर्षर पेशेंट जे कि मरिबा को जाउछि, एही क्षेत्र रे मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन कोन हेबा. द आंसर इज ए, आंसर क्वेश्चंस ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली. नंबर 21, ए फीमेल एडोलेसेंट हु हैज pelvic inflammatory disease inquiries about the effect of disease on her ability to bear children. Which is the pediatric nurse's best response? यार मीनिंग कौन? जने फीमेल एडोलेसेंट जहाँ को कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होईची, इनक्वारी करिबा द्वारा जाना पड़िछि कि एही डिजीज रा खराब प्रभाव तार चिल्ड्रेन बियरिंग कैपेसिटी बा प्रेग्नेंट हेबा कैपेसिटी उपरे पड़ी पारे.
ए पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज केतेबेले होइथाए जेतेबेले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया गुड़िक वैजिना ठारू यूट्रस फालोपियन ट्यूब और ओवरी मध्य को स्प्रेड करिथांती सेतेबेले ए पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होइथाए। ए क्षेत्र रे जने पीडियाट्रिक नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स कौन हेबा? ऑप्शंस आर the occurrence of spontaneous abortion during pregnancy increases with PID. There is an increased risk of ectopic pregnancy or infertility. There is an increased risk of placenta previa. There should be no problem with your ability to conceive. The answer is B. There is an increased risk for ectopic pregnancy or infertility. Question number 22. In preparing a preschool age patient for an injection, the most appropriate nursing intervention is to allow the patient to administer an injection to the doll, coordinate the patient watching a peer receive an injection, have the parents explain the process to the patient, suggest diversionally activities like singing. यार मीनिंग कण जने प्री स्कूल एज पेशेंट को इंजेक्शन नेबा पाई केमती प्रिपेयर करबा? द आंसर इज ए. अलाउ द पेशेंट टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन टू ए डॉल. से पेशेंट को अलाउ करबो कि से गोटे डॉल को इंजेक्शन देओ. नंबर 23. A 4-year-old patient has been diagnosed with leukemia. The patient's parents follow the Jehovah's Witness faith and inform the physician that they will not approve any type of blood transfusions. The pediatric nurse is aware that यार मीनिंग कौन? गोटे 4-year-old पेशेंट जी की ल्यूकेमिया द्वारा अफेक्टेड बोली डायग्नोस होईची. पेशेंट रो पेरेंट्स जिहोवा विटनेस को विश्वास करती और से माने फिजिशियन को कौनसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अप्रूवल देउना. ए क्षेत्र रे पीडियाट्रिक नर्स टी पेरेंट्स को क्यों विषय रे ज्ञात कराइब? एही जिहोवा विटनेस कौन? विटनेस बिलीव इन वन गॉड. जो माने कि गोटे गॉड को बिलीव करती तांको जिहोवाज विटनेस कहती. The options are: in an emergency, a court order can be obtained for the patient to receive blood transfusion. The patient can only receive blood that has been donated by family members. The patient can receive volume expanders. Under no circumstances will the patient receive blood products. The answer is A. In an emergency, a court order can be obtained for the patient to receive blood transfusion. Number 24. An adolescent with chronic asthma who has been hospitalized several times during the winter with severe asthmatic exacerbations confides, "I wish I could stay here in the hospital because every time that I go home, I get sick again." The pediatric nurse's best response is यार मीनिंग कौन? जड़े एडोलेसेंट जी की क्रोनिक आस्थमा द्वारा पीड़ित आ विंटर सीजन रे ताको बारंबार हॉस्पिटल रे एडमिट हेबा को पड़े ड्यू टू सीवियर आस्थमिक अटैक. आ सही एडोलेसेंट टी कहूची कि आई विश मु सब बेला पई हॉस्पिटल रे रही जानती कि कारण मु जेते थरा घर को जाउची सेते थरा असुस्थ होई जाउची. एही क्षेत्र रे पीडियाट्रिक नर्स रा रिस्पांस कौन हेबा? These are the options. The answer is B. Let's talk about preventing and managing your asthma on a daily basis at home. Daily basis रे at home केमिति आस्थमा को प्रिवेंट आउ मैनेज करि हेबो से विषय रे ता संगे कथा हेबो ताकू से विषय रे एडवाइस देबो. Number 25. The major pharmacologic action of albuterol is decreasing airway reactivity, decreasing inflammation and airway obstruction, improving the action of cilia to sweep trapped mucus upward, relaxing constricted bronchial smooth muscle. The answer is D.
relaxing constricted bronchial smooth muscle. यही albuterol कौन? albuterol हेउची गोटे मेडिकेशन जहाँ को आस्थमार ट्रीटमेंट पाई यूज करा जाए ओ यही albuterol लो फार्माकोलॉजिक एक्शन हेउची ताहा ब्रोंकियल स्मूथ मसल गुडी को जो गुडी को की कंस्ट्रिक्ट होता है ताहा को रिलैक्स करता है. Number 26. While caring for a patient who is hospitalized for acute gastroenteritis and dehydration, a pediatric nurse notes the parent keeping packets of herbs by the patient's bedside. Suspecting that the parent may be administering the herbs to the patient, the nurse's first action is to एहार मीनिंग कौन? जड़े पेसेंट acute gastroenteritis and dehydration रे पीड़ित होई हॉस्पिटल रे अछंती. जो पेडियाट्रिक नर्स टी तांकर केयर नेउछंती से नोटिस कले कि पेसेंट रो बेड साइड रे किछि हर्ब्स पैकेट थुआ होइछि. से सस्पेक्ट करूछंती कि से पेसेंट रो पेरेंट्स माने तांको किछि हर्ब्स खाइबा को देइछंती कि से केस रे गोटे नर्स रो फर्स्ट एक्शन कोन हेबो? Options are: ask the parent in a non-judgmental manner about the herbs, coordinate a nursing care conference to discuss the patient's plan of care, discuss the risk of using alternative therapies with the parent, refer the family to a social worker for the possible non-adherence with the healthcare regimen. The answer is A. Ask the parent in a non-judgmental manner about the herbs. से herbs विषय रे parents को अति भद्रतार सहित पचारिबा. Number 27. A pediatric nurse who is caring for a 12-year-old patient with septic shock perceive a potential complication of fluid resuscitation, often nothing. A heart rate of 50 beats per minute, a temperature of 102 degree Fahrenheit, complaints of leg pain, rails and raunchy by auscultation. एहार मीनिंग हेउछि जणे पेडियाट्रिक नर्स 12 वर्षर गोटे पेशेंट केयर नेउछंती जे कि सेप्टिक शॉक द्वारा अफेक्टेड होइछंती. जेतेबेले तार फ्लूइड रिसक्सिटेशन बा फ्लूइड रिप्लेसमेंट हेउछि सेतेबेले जो कॉम्प्लिकेशन गुडिक देखा जाउछि एही ऑप्शन मानक मध्यरु केउटी से कॉम्प्लिकेशन नुहे. द आंसर इज डी. रेल्स एंड रॉन्ची बाय ऑस्कल्टेशन. एही रेल्स एंड रॉन्ची कोन? एहा हेउछि एब्नॉर्मल ब्रीथ साउंड और जेउटा कि सेप्टिक शॉक केस रे फ्लूइड रिसक्सिटेशन टाइम रे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन नुहे. Number 28. During the first 2 years of life, patients with bronchopulmonary dysplasia requiring rehospitalization are most likely to be diagnosed with electrolyte disturbances, immune deficiencies, pulmonary hypertension, respiratory tract infections. फर्स्ट आम देखा यही ब्रोंकोपल्मोनारी डिस्प्लासिया कौन? यह हेउची गोटे ब्रीदिंग डिसऑर्डर जो कि इन्फेंट्र लंग इरिटेट होता है और से लंग्स नॉर्मली डेवलपमेंट हो पारि न थाए. देन आम जीवा क्वेश्चन ऊपर को. इठी हमको कौन पचारछि? लाइफ रो फर्स्ट 2 ईयर रे पेशेंट बा इन्फेंटीर ब्रोंकोपल्मोनारी डिस्प्लासिया द्वारा अफेक्टेड होइछि ताको बारंबार हॉस्पिटलाइजेशन हेबा को पछी. मोस्ट लाइकली ए केस रे तार कोन हेउची जे से बार हॉस्पिटलाइज्ड हेउची. द आंसर इज डी. रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. बारंबार तार रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हेबा द्वारा ताको हॉस्पिटलाइजेशन हेबा को पड़ुची.